All right, so today we are going to talk about the mole. And before we do that, just make sure that you have a copy of periodic table, also scientific calculator. Make sure that you have that. All right, let's get started. Does anybody know what a mole is? Yeah, it is Avogadro's number. Yes. So let's see. Do we give names to numbers? We do all the time. For example, there's this number that we use all the time. It is 12, right? But we give it a number. It is a number. We give it a name, dozen. Now, 12 of anything is a dozen of that. Why do we use it? Multiple advantages. Packing आसान है, transportation आसान है, count करना आसान है. We just group them up as 12s, and that is what we call dozens. Okay? Just like that in chemistry, we have a much bigger group. 6.02 times 10 to the power 23. Just like this is 12, this is Avogadro's number. Okay? But just like a dozen has 12 of anything, a mole has this many of anything. ये बात सबको समझ आई? So mole क्या होता है? Just like अगर आपसे कोई पूछे कि एक दर्जन क्या होता है, एक डजन क्या होता है, it is 12 of anything. जिस चीज के आपके पास अमाउंट 12 में है, that is a dozen of that. 2 dozen means 2 times 24. 2 times 12, 24. Just like that, a mole of anything has this many of that. So that is what we have. But ठीक है, count करना आसान है. हम इसको यूज कैसे करेंगे? So here's the idea. लैब में जब हम चीजों को मेजर करते हैं, हमारे पास काफी चीजें मेजर करने के लिए. लैब में हमारे पास बैलेंस होता है. What does balance measure? What does balance measure? Mass. Yes, very good. So it measures mass of things. Similarly, we have burette, pipette, beakers. What do all of these measure? Volume. Volume of liquid or mixture, solution. Similarly, we have a gas syringe. What does that measure? Volume of Gas. gas. बिल्कुल ठीक है. We have no equipment in lab which can measure mole for us. कोई भी नहीं है. In fact, mole cannot be measured. हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मोल मेजर कर सकें. हमारे पास क्या है? हमारे पास मोल को कैलकुलेट करना आता है. हमें हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है? और जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे पास उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. दैट हेल्प्स अस. ओके, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे, हाउ डज इट हेल्प अस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास practically what can we measure? We can measure mass, volume of liquid and volume of gas. In fact, हमने एक टेक्निक भी सीखी थी, टाइट्रेशन. टाइट्रेशन से हम क्या कैलकुलेट करते थे? कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है. गैस की वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस, और चीजों दूसरों को मेजर करने के लिए mass. So how does mole relate to all of this? The idea is really simple. 1 mole of anything, no matter what, is take its MR. जो भी चीज है उसका MR निकाल लें. MR is pretty straightforward. Water है, 2 times 1 plus 16, 18 हो गया. ठीक है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का mass, क्लोरीन का mass, एट them up 58.5, उसका MR है. MR को ग्राम्स में कर लें. तो अगर वाटर का 18 MR है तो 18 ग्राम्स कर लें वाटर. अगर सोडियम क्लोराइड 58.5 MR है तो 58.5 ग्राम्स कर लें, और वो 1 मोल हो जाएगा. एंड वी कैन इजीली मेजर इट यूजिंग अ बैलेंस. हाउ अबाउट गैसेस? फॉर गैसेस, वॉल्यूम इज ऑलवेज 24 dm cube at room temperature and pressure. Why? Because we know how gases behave. Gases are affected by how many particles you have, what volume they have, what temperature it is, and what pressure there is.
तो अगर आप प्रेशर को भी फिक्स कर दोगे, टेम्परेचर को भी फिक्स कर दोगे और पार्टिकल्स को भी फिक्स कर दोगे, यानी कि आपने कहा है 1 मोल जितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.02 into 10 power 23 जितने पार्टिकल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने 3 चीजें फिक्स कर दी तो फोर्थ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, दैट इज वॉल्यूम. This is called Avogadro's law. So 1 mole of any gas will always take 24 dm cube at room temperature and pressure. So now we have a very straightforward method. अब 1 mole कितना है? किसी भी चीज के mr grams ले लें, 24 dm cube ले लें of gas और वो 1 mole है. और उसमें particles कितने होंगे? 6.02 into 10 power 23. All right, let's put it to some work. Here's a question. What mass of oxygen is 3 moles? Very simple question. अब what mass of oxygen? पहली बात ये कि जब भी ऑक्सीजन की बात होगी, नाइट्रोजन की बात होगी, क्लोरीन की बात होगी, आपने उसको ऑक्सीजन O2 सोचना है. Okay? That is what you are going to consider this. आपने उसको ये नहीं सोचना कि वो ऑक्सीजन O है. नहीं. In your exams, whenever they say oxygen, nitrogen, hydrogen, they mean the diatomic molecule. हाँ, अगर कभी ऑक्सीजन होगा तो वो आपको खुद बताएगा कि ये ऑक्सीजन है. Okay? All right. Now let's do this. What mass of oxygen is 3 moles? No problem. Let's start with what mass of oxygen is 1 mole. So what is the MR of oxygen? You have O2. So MR is going to be 2 times 1 oxygen, which is 16 from the periodic table. So that is 32. So हमने क्या पढ़ा था? 1 mole of anything is what? Take the MR grams. So 32 grams. And what do we have? 3 moles. 3 moles is X grams. और हमें मिल जाएगा X is equal to 32 times 3, which is 96 grams. अच्छा, अब इसका ना for some reason we are obsessed with not using our brains. तो हमें ना कुछ शॉर्टकट चाहिए होते हैं. तो हमारे पास उसका भी एक फॉर्मूला है, बट आप देखोगे कि वो फॉर्मूला टेक्निकली यही चीज है. मैं आपको बताता हूं. अगर मैं इसको उल्टा कर लूं कि अच्छा 3 मोल X है और 1 मोल 32 ग्राम्स है, सही है? तो ये बन जाएगा 3/1 is equal to X over 32 grams. और अगर जरा गौर करें तो what is 3? 3 is the number of moles. और 1 क्या है? 1 मोल. और ये X क्या है? It is mass. और ये 32 क्या है? MR. तो ये क्या है? It's just telling me the number of moles you're looking for has M mass when 1 mole has MR gram mass. तो हम 1 नहीं लिखते तो हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया. Number of moles is mass for MR. So now any mindless monkey can do it. और हम तो फिर इंसान हैं, हमें तो फिर ज्यादा अक्ल है हमें. This is called mole conversion. How you convert whatever values you have into moles, mass, whatever. Now let me take it one step further. अगर मैं आपसे कहूं what mass of oxygen occupies 32 dm cube. Now let's break it this question down. हमें उससे पूछा है mass और हमें उसने वॉल्यूम दे दिया. So let me think about it. हमने पढ़ा हुआ है that 1 mole is what? MR grams and 24 dm cube. That's what 1 mole is, right? So what is MR of oxygen? 32. तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं that 1 mole will be 32 grams and 24 dm cube. What do they give us? They say what mass is oxygen, यानी कि mass X है when volume is 32. So 32. And there you go, we can easily compare it. So 32 cross multiplied is equal to 24x.
And then we'll divide this 24 here and we will get our answer. So let me just solve it. 8 4s are 32, 8 3s are 24. 4 over 3 times 32. I don't know, 43 point something. Whatever this is. Can you calculate, please? Whatever the answer is. 32 times 4 over 3. ये आपके पास आ जाएगा ग्राम्स में आंसर. ओके, दोबारा से गौर करें मैंने क्या किया. मैंने 1 मोल की डेफिनेशन को यूज किया है. That 1 mole is this many grams and this much dm cube. So x grams and 32 dm cube. क्योंकि ये उसने मुझे वैल्यू दे दी थी और मैंने बस मोल की डेफिनेशन को यूज किया. This is mole conversion. I've shared a worksheet with you all. Let's try this. Okay. So the first question from the worksheet. What would be the volume of 85.5 grams carbon monoxide at room temperature and pressure? Okay, so इसकी volume चाहिए हमें. Let's see. 1 mole कितना होता है? 1 mole is, for this thing, इसका MR 28 होगा. So 28 grams is what? और इसकी volume क्या है? 1 mole की volume क्या होती है? 24 dm cube. So अब 85.5 grams will be x dm cube and you cross multiply it. So it's simply a ratio thing. So 28x is equal to 24 times 85.5. X is equal to 24 times 85.5 over 28. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है. एग्जाम में आप कोशिश करना कि यहां तक बगैर कैलकुलेटर के आना. Write all the numbers. Just write them as I've written के multiply होगा. मैंने उसको कैलकुलेटर में नहीं ऐड किया. Once I have the final numbers, अब मैं इसको कैलकुलेटर में ऐड करूंगा. And thank you for us. So we have 73.3 dm cube as our answer. If you write all the numbers and if you show them as it is, you will get number one. You will not make a mistake because it's very difficult to make a mistake when you're focused, not using a calculator, not approximating and all that. And secondly, आप जल्दी भी करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपको बार बार कैलकुलेटर पे चीजें एंटर करके नया आंसर ये वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, ऑलराइट, लेट्स अटेम्प्ट अनदर क्वेश्चन. Okay, let's do question number 2. Question number 2 says how many molecules? So how many molecules in 0.5 grams carbon disulfide? So carbon disulfide का फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए. Alright, let's see. उसने हमें molecules मांगे हैं और mass दे दिया. So let's go back to our definition. What is 1 mole? 1 mole is, what is the MR of this thing? MR grams होता है ना 1 mole. So 12 plus 32 times 2, 64, 76. 76 grams इसका MR है. So 1 mole is 76 grams. And how many molecules in that? Does anybody know? एक मोल में कितने molecules होते हैं? Avogadro's number. That is how many particles you have. Or molecules are particles, right? So this is 6.02 times 10 to the 23. तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल में 76 ग्राम्स होंगे और 6.02 in 10 power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, तो 0.5 ग्राम्स में कितने होंगे? कोई मसला ही नहीं है. You cross multiply 76 times x is equal to 0.5 times this whole thing. Again, please don't put it in a calculator. Keep it as it is until you get to the last step. And now put it in a calculator. ठीक है, हो जाएगा. So go on. Select any question between 4, 5 and 6 and try to solve it. Can you check again? I think your answer should be 3.96 and 10 power 21. Done? So I hope you are able to solve any of the 4, 5 and 6. Now let's try question number 7. Question number 7 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं what would be the mass of
सो mass निकालना है हमने of 3.5 into 10 power 25 molecules of chlorine. अब क्लोरीन लिखे ना तो वो Cl2 है, ठीक है? ओके, लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ चाहिए, तो 1 मोल होता है mr. सो क्लोरीन का mr कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटर में विल पुट 2 times 35.5. 35.5 पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, एंड बिकॉज Cl2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 71 ग्राम्स. सो 1 मोल क्लोरीन कितना होता है? 71 ग्राम्स. 71 ग्राम कितना होता है? 1 मोल. एंड how many molecules in that? Avogadro's number 6.02 into 10 power 23. ठीक है? So 3.5 into 10 power 25 will be x grams. You cross multiply again. Do not just mindlessly put it in a calculator. Relax, just copy the numbers, multiply them like that. You don't need to find a final answer yet. अब इसको हम करेंगे यहाँ पे divide, and now we'll put it on calculator. Now here's a thing. सुनना गौर से everybody. When you will put it in a calculator, if you don't use brackets, then आपका कैलकुलेटर समझेगा कि ये 10 पावर 23 और ये 10 पावर 25 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्योंकि हम कैलकुलेटर पे किस तरह लिखेंगे? 71 multiplied by 3.5 into 10 power 25 divided by 6.02 into 10 power 23. So बॉर्ड मैथ्स लगाओ, कैलकुलेटर को लगेगा ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहे हैं, और जो आंसर आएगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है. तो वो 10 पावर 47, 10 पावर 46, 48 आपको आंसर में दे देगा. सो ईदर यूज द फ्रैक्शंस और यूज ब्रैकेट्स. ठीक है? when you put it in a calculator. So go on, tell me what you get. x क्या है? ये देख लेते हैं, ये तो 2 रह जाएगा ना. तो I'm getting 58.1, जो कि मुझे गलत लग रहा है. Oh yeah, 4128 grams. That's what I got. I think ये सही होगा. Get it? So ये है हमारे पास मोल कन्वर्जन. सबको समझ आ गई? I will give you a few minutes. क्वेश्चन नंबर 1 से, जो नीचे प्रॉब्लम 1 से लेके प्रॉब्लम 16 तक, try to do any 3 of the questions. Answers लिखे हुए. If you don't understand, मुझे बताएं. Alright, so stoichiometry. होती क्या है stoichiometry? Weird सा नाम है. Basically the idea is कि आपको किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और किसी दूसरी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे. That's it. That's the concept. किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी और किसी और चीज की इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करनी होगी. Let me give you 2 examples ताकि चीज समझ आ जाए. अब स्टोइकियोमेट्री को करने के 2 मेथड्स हैं तो वैसे काफी मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा. वन मेथड इज द मोर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मेथड, जो मैंने भी स्कूल में पढ़ा था, एंड आई एम श्योर आपके भी स्कूल में सर ने, मैम ने करवाया होगा आपको. और एक मेथड है जो मैंने खुद बनाया है. सो मैं वो ग्रेड 10 में था जब मैंने वो बनाया था, क्योंकि मुझे मोल्स आता ही नहीं था, और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मतलब आई एम एक्चुअली रियली, इट्स माय ब्रेन चाइल्ड. ओके, है बहुत सिंपल सी चीज है. ओके, लेट्स डू इट. हियर्स द क्वेश्चन. व्हाट mass of oxygen is required to react with 300 cm cube hydrogen? और इक्वेशन ये है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन makes water. अच्छा, now here's the traditional method. There's nothing wrong with it. मतलब it works perfectly every single time. So उसको आपने इस तरह से देखना है कि ट्रेडिशनल मेथड आपका ये जर्नी है. You will start here. You will first
use mole conversion, जो भी हमने सीखी है, to find moles of whatever the first thing is. First thing क्या है? जिसकी इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने दी हुई है. Then you will use the equation to find moles of the second thing, यानी कि ऑक्सीजन की moles. And then you will use mole conversion again to find the answer. So you will start with whatever info you have. You will find the moles of first thing. You will use the equation to find moles of the second thing. And then you will get your answer. So let me show you. मुझे उसने बताया है कि 300 cm cube of hydrogen है और mass of oxygen निकालना है. इन दोनों की बात हो रही है. अच्छा जी. So I will first use my information 300 cm cube to first find moles of oxygen. अब मुझे पता है कि 1 mole is 24 dm cube, यानी कि 24,000 cm cube. So x moles is going to be 300 cm cube. Cross multiply. 300 is equal to 24,000 x. So x is going to be 300 over 24,000. You cancel हो गया ये. So 1 over 80 moles. मैंने इसको फ्रैक्शन में ही रखा है. एक तो ये तरीका है. आप कहते हो कि नहीं मैंने ये नहीं करना, कोई मसला नहीं है, आप फॉर्मूला यूज कर लो. नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम ओवर 24. सो वॉल्यूम है 300 तो 24,000 कर देंगे इसको, तो 300 ओवर 24,000, तो वापस नंबर ऑफ मोल्स इज 1 over 80 मोल्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या था? आप यहां से शुरू हुए, अब आप यहां तक पहुंच गए हो, आपने स्टेप 1 कर लिया. स्टेप 2, take this moles and find moles of the second thing. Equation पे चलते हैं. 2 moles of hydrogen need 1 mole of oxygen. 2 moles of hydrogen need 1 mole of oxygen. So मेरे पास 2 को 1 चाहिए, तो 1 over 80 को x चाहिए. So cross multiply again. x 2x is equal to 1 over 80 times 1, वो 1 over 80 रहेगा. And this makes it 1 over 160. ये मेरा second step हो गया. ये मेरे पास moles of oxygen आ गए using mole ratio. तो हम यहां से शुरू हुए थे, हमने मोल्स निकाली, यहां तक पहुंचे, यहां से वापस इधर आए और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन आ गए. अब हमें आंसर चाहिए. आंसर क्या है? मैस. तो इसको भी हम, ये थर्ड स्टेप है हमारा. सो इसको कैसे कर सकते हैं? वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज mr ग्राम्स. ऑक्सीजन का mr 32 ग्राम्स एंड आई हैव 1 over 160 मोल्स, सो x ग्राम्स होगा. Cross multiply again. X equals to 32 times 1 over 160. तो ये बन जाएगा 2 over I don't know 10, 1 over 5 grams, if I'm not wrong. Yeah, तो 0.2 grams मेरा आंसर आ जाएगा. आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप उसको ऐसे भी रख सकते हो. आगे आप कहते हो नहीं मैंने फॉर्मूला यूज करना है, कोई मसला नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स इज मास ओवर mr. Number of moles is 1 over 160. Mass is unknown. mr is 32. Cross multiply. 32 over 160 is equal to mass, which is again going to be 0.2 grams. हो गया. So we have started here. Find moles. ये. Then mole ratio to get here. ये. And then use that to find the answer. Yeah. Clear? To be honest, when I was in school, मुझे नहीं समझ आया था. मतलब मैं भूल जाता था and I used to make mistakes and कभी ये step गलत हो गया तो बाकी अगला भी गलत हो गया. So here's what I came up with. And I need you to pay attention, everybody. तवज्जो. Don't write it down. I'll share the notes with you. Just focus. वापस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन ये था कि 2 hydrogen react with 1 oxygen, make 2 water. And what mass of oxygen reacts with 300 cm cube hydrogen? ये क्वेश्चन था.
Here's what we are going to do. क्वेश्चन में देखें उसने ऑक्सीजन की बात की है, हाइड्रोजन की बात की है, वाटर की बात नहीं की. वी आर गोइंग टू इग्नोर इट. जिस चीज की उसने बात नहीं की, वी आर गोइंग टू इग्नोर इट. व्हाई? बिकॉज इट डजंट मैटर इन द क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर क्वेश्चन में कभी वो कह दे कि ये चीज इन एक्सेस है तो हमने उसे इग्नोर कर देना. ओके, सो वी इग्नोर वाटर. नेक्स्ट स्टेप, कॉपी एवरीथिंग जिसकी उसने बात की है. सो उसने हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बात की है ना, जस्ट कॉपी इट. 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया. ठीक है. इसके मैस की बात कर रहा है वो, ये देखें, मैस ऑफ ऑक्सीजन. और इसके वॉल्यूम की बात कर. जिंदगी बदलने वाली है, गौर से देखें. मुझे सिर्फ ये बताएं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या होती है. यस, 24,000 cm क्यूब. ये 1 मोल की वैल्यू है. अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन का मैस क्या होता है? 32 ग्राम्स. ये वॉल्यूम, वो ग्राम्स. क्वेश्चन है व्हाट मैस रिएक्ट्स विद 300 cm क्यूब. 300 यहां लिखा, व्हाट मैस x यहां लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 times 24,000 x इज इक्वल टू 32 times 300. कोई नंबर कैलकुलेटर में नहीं डालना, बस यहीं पे लिखते जाएं. और अब ये पूरा यहाँ पे डिवाइड करेंगे. सो x इज गोइंग टू बी 32 times 300 over 2 into 24,000 and just put it in a calculator, you'll get the same answer. 1 over 5 यानी कि 0.2 grams. One step solution guys, one step. That's all we need. मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है. If you're comfortable with this method, there's absolutely nothing wrong with it. It works every single time without any fail. ठीक है? Whatever you're comfortable with. Main चीज वो है. All right. Let's try one more question. Nitrogen plus 3 hydrogen makes ammonia. Okay. Here's the question. Okay, so here's a straightforward question. What volume of nitrogen produces 700 grams ammonia? Okay, be with me everybody. किस चीज की उसने बात नहीं की इस क्वेश्चन में? 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया. हाइड्रोजन, सो विल इग्नोर इट. वेरी गुड. बाकी सब कॉपी कर लें. नाइट्रोजन और अमोनिया विद द नंबर्स बस कॉपी कर लें. ठीक है. देखें, इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम होगा. इसके मैस की बात कर रहे हैं तो इसका मैस होगा. इसका ग्राम्स बोले ना उसने, मैस है. अब बस 1 मोल की वैल्यू बताते हैं. फर्स्ट लाइन में 1 मोल की वैल्यू लिखनी है. सो 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है? 24,000. वेरी गुड. या 24 dm क्यूब या 24,000 cm क्यूब, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं. अच्छा, 1 मोल अमोनिया का मैस क्या होता है? अब देखिए, मैंने ये 2 को नहीं छेड़ा. क्यों? मुझे 1 मोल सिर्फ इसकी जगह लिखना है. सो 1 मोल अमोनिया का मैस होता है 17 ग्राम्स. ये इसका एमआर है. सो मेरे पास रेशो आ गया. मुझे पता लग गया कि 24 dm क्यूब ये जो है ना, ये इतने ग्राम मैस प्रोड्यूस करता है. सो आई हैव 700 ग्राम्स. सो आई जस्ट से ओके x. सही है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 24 times 700 इज इक्वल टू 2 into 17 times x. ये सब इधर आके डिवाइड करेगा और आ गया आंसर. डन. वो क्या कहते हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. थैंक यू नेस. 494. रियली? अच्छा चलो ठीक है, इतना ही होगा. डीएम टू. ओके, सो कल से मेक श्योर यू हैव पीरियोडिक टेबल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विद यू. ऑलराइट, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.